So question number 21 says that would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, or less negative than the first? Justify your answer, right? So students, they are asking for the second electron gain enthalpy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, राइट? सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, electron is added to O atom, right, to form O negative ion. So in this case, students, energy is released, right? So you can say that first electron gain enthalpy is negative. So oxygen, on addition of electron, it will become O negative. So negative it is having negative electron gain enthalpy, which is minus 141 kilojoule per mole. So but when we add the second electron to O negative to form O negative, O2 negative ion, right? On adding second electron to O negative to form O2 negative ion, right? So in this case, energy is absorbed. Energy is absorbed. अब इस केस में एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? In order to overcome the strong electrostatic repulsions between negatively charged O negative ion and the electron that is being added, right? So energy is absorbed to overcome the strong electrostatic repulsion between the negatively charged O negative ion and second electron being added, right? So thus we will say that second electron gain enthalpy of oxygen is positive. Thus second electron gain enthalpy of oxygen is positive. So adding electron to O negative, it will become O2 negative, right? अब देखो बच्चे, अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है? एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? ड्यू टू दिस रीज़न कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओ नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? रिपल्शंस हो रही हैं, ठीक है? इन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. So to get the further solutions of more questions, please download Wisecul app.